हेलो स्टूडेंट्स, आपके लिए एक सवाल है। क्या आपने कभी फादर ऑफ ज्योमेट्री के बारे में सुना है? चलिए आपको एक हिंट देते हैं। He was not an Indian. He was from Greece and that too around 300 BC. That long back. क्या आप पहचान पाए? Yes, his name was Euclid. And why was Euclid called father of geometry? Because of the work done by him. बेसिकली उस टाइम तक जितने भी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स नोन थे उन्होंने उनको कंपाइल किया एंड ही अरेंज्ड देम इन अ मैथमेटिकल ट्रीटीज व्हिच ही कॉल्ड एलिमेंट्स. नाउ दिस बुक एलिमेंट्स इज डिवाइडेड इनटू 13 चैप्टर्स. ईच चैप्टर इज कॉल्ड अ बुक. इसमें प्लेन ज्योमेट्री, देन अर्थमेटिक, नंबर थ्योरी, सॉलिड ज्योमेट्री सभी कुछ है. आज हम इसी ट्रीटीज में से कुछ डेफिनेशंस, एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स पढ़ने वाले हैं. सबसे पहले शुरुआत करते हैं बेसिक डेफिनेशन से. अकॉर्डिंग टू यूक्लिड द फर्स्ट डेफिनेशन स्टेट्स दैट अ पॉइंट इज दैट व्हिच हैज नो पार्ट, यानी कि इसका कोई आगे हिस्सा नहीं होता. देन वी टॉक अबाउट लाइन. लाइन इज अ ब्रेथलेस लेंथ, यानी कि जिसकी की कोई चौड़ाई नहीं होती. द एंड्स ऑफ लाइन आर पॉइंट्स. तो जो एंड्स होंगे लाइन के उनको हम क्या कहेंगे? पॉइंट्स. And a straight line is a line which lies evenly with points on itself. यानी कि अगर आप बहुत सारी पॉइंट्स को कंबाइन कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? We will get a line. Next we talk about surface. Surface is that which has length and breadth. यानी कि दो डायमेंशंस हैं, length and breadth. The edges of surfaces are lines and a plane surface is a surface which lies evenly with straight lines on itself. यानी कि एक प्लेन सरफेस में आपके पास स्ट्रेट लाइंस होती हैं. अगर आप उन स्ट्रेट लाइंस को कंबाइन कर देते हैं, we get this plane surface. So these were the definitions which I wanted to discuss with you. Next we move on to understand what are the axioms. Before we discuss the axioms, we should also know what do we actually mean by axiom. Axiom होता क्या है? So axiom is basically a statement or a assumption which is universally true. It is a universal truth. वो तो सच है ही, जैसे हम बोलते हैं ना, तो वो तो सच है ही. So that type of definitions or statements are called axioms. We will study about 7 axioms along with the examples. According to the first axiom, things which are equal to the same thing are equal to one another. For example, if A is equal to B and C is also equal to B, तो आप A और C के बारे में क्या कहेंगे? Definitely they will also be equal. तो हम समझते हैं things equal to the same thing are equal to one another. Let's move on to the second axiom. So the second axiom states that if equals are added to equals, the wholes are equal. बहुत आसान है इसको समझना. We know 5 is equal to 5 and we also know 2 is equal to 2. चलिए अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं दोनों तरफ से. What will you get? 5 plus 2 7 and then again 5 plus 2 7. So 7 is definitely equal to 7. यानी कि जब equals आपस में ऐड हो जाते हैं, जो दो होल्स हमें मिलते हैं, they are also equal. चलिए बढ़ते हैं थर्ड एक्सियम की तरफ. According to Euclid, the third axiom states that when equals are subtracted from equals, the remainders are equal. उसी एग्जाम्पल से समझते हैं. 5 is equal to 5 and 2 is equal to 2. चलिए सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. What do we get? Yes, we get 3 on both the sides and 3 is equal to 3. यानी कि जब equals equal से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो हमारे जो रिमाइंडर्स होंगे they will also be equal. Let's move on to the fourth axiom. Euclid's fourth axiom states that things which coincide with one another are equal to one another. अब आप देखिए, यहाँ पर एक लाइन है AB और दूसरी लाइन है PQ. चलिए AB को PQ पर रख कर देखते हैं. क्या हुआ? They are getting superimposed. अब ऐसा लग रहा है कि एक ही लाइन है, दोनों आपस में ओवरलैप कर गई हैं. यानी कि AB line is equal to PQ line. Right? Similarly, you can see two stars. Let's try to overlap them. When one star is kept over the other star,
it is completely covering the first star. That means both the stars are identical, they are equal. So that's how we understand that things which coincide with one another are equal to one another. Next, we move on to the fifth axiom. Euclid's fifth axiom states that whole is greater than the part. अब ये समझना बहुत आसान है. आप मानिए आपकी मम्मी ने एक पिज्जा ऑर्डर किया, एक मीडियम साइज का पिज्जा, उसमें 6 पीसेस होते हैं, आपको एक पीस खाने के लिए दिया. Now you have one part of that pizza. Tell me that part is greater or the whole pizza is greater? Obviously the whole pizza is greater. That's how we understand that whole is always greater than the part. Next we move on to the sixth axiom. Euclid's sixth axiom states that things which are double of the same thing are equal to one another. इसे समझते हैं. अगर A twice of B के बराबर है और C भी twice of B के बराबर है, तो what can you say about A and C? Definitely they will be equal. तो अगर कोई दो चीजें हैं वो एक डबल ऑफ एक ही चीज के बराबर है तो वो आपस में भी बराबर होंगी. So now let's come on to the seventh axiom and the last axiom, which states that things which are halves of the same thing are equal to one another. उसी एग्जाम्पल से समझते हैं. If A is half of B and C is also half of B, then what can you say about A and C? Yes, definitely they will be equal. A and C will be equal because they are halves of the same thing, which is B. So that was the seventh and the last axiom. Next we move on to the postulates. So postulates are also assumptions which are taken to be true. That means again a universal truth. You would be wondering then that what is the difference between axioms and postulates? See the definition carefully. Postulates was used by Euclid to define those assumptions which are specifically linked to geometry. And when he talked about axioms, axioms are those statements or those assumptions which can be applied to all mathematical concepts in general and not specifically linked to geometry. तो चलिए देखते हैं क्या है ये postulates. We will be discussing 5 postulates with you along with example. The first postulate given by Euclid is that a straight line can be drawn from one point to another point. इसको समझते हैं. अगर आपके पास एक पॉइंट दिया है तो आप उससे एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं दूसरे पॉइंट तक. बच्चों, जब हमने पहले इस कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा और अगर आपके पास सिर्फ एक पॉइंट दे रखा है तो उससे आप इनफाइनाइटली मेनी लाइंस बना सकते हैं. बट व्हेन देयर आर 2 पॉइंट्स देयर कैन बी ओनली वन स्ट्रेट लाइन व्हिच कैन बी ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू another point. This is Euclid's first postulate. Let's move on to the second postulate now. The second postulate of Euclid states that a terminated line can be produced indefinitely. यानी कि एक लाइन अगर टर्मिनेटेड है तो हम उन्हें दोनों साइड से जितना मर्जी चाहें आगे बढ़ा सकते हैं. They can be produced indefinitely. This is the simple second postulate of Euclid. Let's move on to the third postulate now. So the third postulate of Euclid says that a circle can be drawn with any center and any radius. तो जब आपको सर्कल बनाना होता है आप कैसे बनाते हैं? आप कंपास यूज करते हैं, उसकी मेटल टिप रखते हैं एक जगह पे और मेटल टिप और जो पेंसिल होती है उसमें जितना डिस्टेंस होता है वो आपका रेडियस हो जाता है. अब ये मेटल टिप जहाँ पे होती है वो सेंटर होता है. ऐसे आपने एक सर्कल बना लिया. आप मेटल टिप को कहीं और भी रख सकते हैं, रेडियस को बड़ा और छोटा भी कर सकते हैं. You can make many different circles with different center and different radius. So that is what the third postulate explains, that a circle can be drawn with any center and any radius. Let's talk about the fourth postulate now. So the fourth postulate says that all right angles are equal to one another. Easy है ना समझना, क्योंकि right angles क्या होते हैं? Yes, right angles are 90 degree in measurement. So all right angles will be equal. चाहे वो टेबल में बनने वाला राइट एंगल हो, चाहे वो क्लॉक में जब 3 बजते हैं तब वो राइट एंगल बना रहा हो, या आपके लैपटॉप के एजेस 90 डिग्री का एंगल बना रहे हो.
So all these are right angles and they are equal. Let's move on to the fifth postulate now. So the fifth postulate of Euclid states that if a straight line falling on two straight lines makes interior angles on the same side of it less than two right angles, then if the lines are produced indefinitely, they will meet on that side on which the sum of angles is less than two right angles. मैंने आपके सामने postulate रखा. ऐसा लग रहा होगा कि ये postulate बहुत difficult है, but actually it is very easy. Let's understand it with the help of the figure. तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस फिगर में, there are two lines P and Q. The line R is falling on P and Q, and there are four interior angles that are getting made here. Can you identify them? Yes, they are angle 1, angle 2, angle 3 and angle 4. तो ये हमारे पास चार इंटीरियर एंगल्स आ गए. इसमें ऑन द सेम साइड पे कौन से एंगल्स हैं? एंगल 1 and 4 आर ऑन वन साइड एंड एंगल 2 and 3 आर ऑन द अदर साइड्स. ध्यान दीजिए, व्हाट इज द टाइप ऑफ एंगल्स? एंगल 1 and 4 किस टाइप के एंगल्स हैं? दे आर ऑब्ट्यूज एंगल्स. दैट मीन्स देयर सम इज ग्रेटर देन 180 डिग्री. और अगर हम एंगल 2 and 3 को देखते हैं, they are acute angles and their sum is less than 180 degree. जब हमने fifth postulate की बात की, उधर हमने लिखा less than two right angles. What does less than two right angles mean? Right angle क्या होता है? Right angle 90 degree होता है. तो two right angles क्या हो जाएंगे? That will be 180 degree. तो अब बताइए less than 180 degree कौन सी साइड पे हुआ? लेस देन 180 डिग्री उस साइड पे हुआ जिस साइड पर एंगल 2 और 3 हैं. तो अगर हम P and Q लाइंस को एक्सटेंड करेंगे जिस साइड पर एंगल 2 and 3 हैं, तो हम देखेंगे कि ये दोनों लाइंस इसी साइड पे जाके आगे मीट करेंगे. एंड दैट इज व्हाट इज एक्सप्लेन्ड इन द फिफ्थ postulate. So the fifth postulate was supposed to be deduced from the above four postulates. But all the attempts to prove this fifth postulate as a theorem have failed. But these efforts have led to a great achievement. And what is that? That is the creation of several other types of geometries. And these geometries are different from Euclidean geometry. In fact, they are called non-Euclidean geometries. The universe in which we live is supposed to have a non-Euclidean geometry. Now, in this non-Euclidean geometry, it would be interesting for you to know that lines are not straight. Rather, they are paths of great circle. Now it's a task for you. Find out more about these non-Euclidean geometries. It will be an interesting activity. Now coming back to the fifth postulate. There are many equivalent versions of the fifth postulate. One of them is Playfair's axiom. Playfair's axiom states that for any line L and for any point P not lying on line L, there is a unique line M which will pass through P and will be parallel to line L. जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, ये एक लाइन है L and there is a point P which is not lying on line L. Now because it is a point, there are many lines which will pass through point P, but only one of these lines will be parallel to line L. That is line M. So over here we see that from point P only one line M will be parallel to line L. So this is what is the Playfair's axiom, and it can also be stated in a different form, which is two distinct intersecting lines can never be parallel to the same line. अगर दो intersecting lines आपने ली हैं, वो कभी भी एक ही line के parallel नहीं हो सकती. Now the task for you is to tell me how did we deduce this Playfair axioms from the fifth postulate. बहुत आसान है, आप सोचिएगा और बताइएगा. Also you have to do the following questions which are based on Euclid's axioms and postulates. Till then, take care of yourself. We will soon meet you in another session with another interesting topic. Happy learning to all of you.